on to the first chapter of the biology, the living world. हम लोग को लिविंग वर्ल्ड नाम से ही पता चलता है कि द वर्ल्ड विद variety of families of the species of the living organisms present in the world. So going through the paragraphs and each lines will help us more to understand. So let us get into it. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. Really, कभी सोचे हो कि ये जो वर्ल्ड है सब कुछ जितना भी लिविंग वर्ल्ड बटरफ्लाई बोलो एनिमल्स ह्यूमंस प्लांट्स ऑल आर लिविंग हाउ वंडरफुल इट इज़ the wide range of living type is amazing, right? Now the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it in cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. The beauty of the galloping horse or the migrating birds, the valley of the flowers or the attacking shark evokes awe and the deep sense of wonder. Ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of the community or even the molecular traffic inside the cell makes us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions. So we will look on to that. What is living? Living actually क्या है? Now when we try to define living, हम लोग को यही याद आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका जान है. Like if we talk about plants, we talk about humans, we talk about different categories of animals, plants, organisms. So the growth, reproduction, ability to sense environment and mount a stable, suitable response come to our mind immediately as unique features of the living organisms. You can add a few features like metabolism, self-replicate or self-organize, interact and emergence to this list. Like we humans can sense the environment every time, and also we humans can sense the chemicals entering and leaving our body. This is possible only the, for the living organisms, only for the humans, not all the living organisms, but chemicals entering and leaving ये चीज़ हम लोग को सिर्फ ह्यूमंस में समझ में आता है. एंड नेक्स्टली वी सी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है. कैसे ग्रो करता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. नाउ a multicellular and in unicellular, the word is we heard. Now a multicellular organisms grows by cell division. ये प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का होता है और प्लांट में भी सेल डिवीजन का ही होता है जो कि उस प्लांट में थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है और ह्यूमन में एक सर्टेन एज तक होता है. हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल. मतलब कुछ ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल डिवीजन ऑकर होता है बट व्हाई? टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स. Now in unicellular organisms grow by cell divisions. They also grow by cell division. One can easily observe this in the vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in the body mass is considered as growth. अभी हम लोग का मास में बॉडी का मास में ग्रोथ होता है, देन वी ग्रो. दैट इज़ नोन एज द ग्रोथ ऑफ ए बॉडी. अभी हम लोग नहीं बोल सकते कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो. वाई? बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास में इंक्रीज नहीं होता है बट उनका ऊपर में कभी कभार मॉसेस दिखाई देता है. मॉसेस मीन्स हम लोग उसको शेवला कहते हैं. सो दैट मॉसेस विच अपीयर increase in the length or the shape of that particle, and it seems that it have grown up, but actually from inside it has not been grown up, from outside it have been grown up. Therefore non-living organisms can grow but not from in but from out. Now dead organisms cannot grow at all. Now reproduction, if we come to reproduction, is the characteristics of a living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Organisms to millions of asexual spores they produce like fungi. फंगाई में क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स होता है जिसके वजह से वो फैल जाता है. That is spread, and because of the spreading many fungi bonds. Now in lower organisms, yeast and hydra, we observe budding like planaria.
Planaria is the flatworms. Now we observe planaria that regeneration occurs. ट्रू रीजनरेशन हम लोग उसी को कहेंगे जो कि हम लोग को बताता है, अगर सपोज एक सेंटिपिड है, सेंटिपिड मतलब लाल रंग का लंबा होता है, चल के जाता है जो, तो वो जो सेंटिपिड है अगर उसका एक पार्ट काट जाता है, then we see that it regenerates its lost part and again start moving. If we talk about a lizard also, lizard का जो पूंछ होता है, if that cuts out suddenly, then it does not die or it does not suffers too much of pain because it regenerates its lost part and again start living a new life, new day and move around normally. So likewise, reproduction is a characteristic of a living organism. Now if we come to metabolism, all living organism are made of chemical. जैसे कि मैंने पहले बोला, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वो केमिकल से बना होता है. सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना केमिकल अंदर बाहर जा रहा है इसको समझ पाता है. सो दिस इज़ मेटाबॉलिज्म. अभी जो मतलब ह्यूमन में बड़ा बड़ा केमिकल्स स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्शन को कन्वर्ट होता है और ये स्मॉल पीसेस को बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है. तो ये जो बड़ा बड़ा केमिकल स्मॉल पीसेस मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, दिस कन्वर्शन इज एक्चुअली नोन एज what? This conversion is actually known as metabolic reaction, or we can also call it as chemical reaction. Now unicellular or multicellular both undergo this type of metabolism or metabolic reaction. Now cellular metabolism is a defining feature of the life forms, so we can tell that metabolism is another characteristic of the life. So till today, first part is till this only. I will keep up to here. In next part 2 will be uploaded soon, and also I want to make you sure that I will be giving biology notes for the same chapters I go through. Also all the teachers except me of the physics, chemistry and all will provide you with the notes, and you make sure you kindly take out the printout of the same. It will not only help you studying properly, it will also help you to carry it further and far away. So kindly print it out and go through it.